We'll start with a brief recap of what we did last in the last class, and then we will. Yeah. Okay. Okay. This is a summary of what we have done. So we're studying electricity, and we see what is electricity. It is basically charge in motion, right? Right. Then we have talked about what is electric charge, okay, and we have a type of charge, positive and negative, and we have a property of like charges and unlike charges. Unlike charges attract each other, right? And similar charges repel each other. Okay. Then we have moved on to what is Coulomb. Okay, we have defined what is Coulomb. I've told you if we have two similar charge, it is said to be 1 Coulomb if it is at a distance of 1 meter and exert a force of 9 into 10 raised to 9 Newton. Then we will say that it is 1 Coulomb charge. Right? We have covered that. Then we have seen that how many electron possess a negative charge of 1.6 into 10 raised to minus 19 Coulomb. And to constitute 1 Coulomb of charge, we need this much of electron. This calculation we have already done. Right? Then we have talked about conductors and insulators. Like I told you, like in conductors, we have free electrons, right? And these free electrons is what is constituting your electric current. Means there is no hurdle in between, and they can just move freely. And in case of insulator, we have bounded electrons. So if electrons are bounded at the end of the wire, it is highly unlikely for them to go to another end. Okay. While in case, sorry, they can't move easily. they can't move easily, right? Here, if one electron is at one end, it can easily move to the other end, right? Here, it is not possible. It is very highly unlikely that electron from one end can go to another end without any force or potential or something. So this is the difference between conductors and insulators. A substance through which electricity can flow easily and substance through which electricity cannot flow easily. And we have and the main thing is that we have free electrons in the conductors and the absence of free electrons in the insulators. And examples, all the metals are good conductors, and glass, rubber, ebonite, and plastics, these are insulators. This we have covered. We have talked about static and current electricity. There's one difference, that charge which is at rest, it is static, and if it is in motion, it is current, right? And also we have talked about glass rod rubbed with silk, or ebonite rubbed with wooden cloth, or plastic comb rubbed with dry hair. These all will possess some static charge. When we talked about electric potential and potential difference, we have talked in detail, right? So you remember the is the notation. So we have talked about, right, that there is a field, right? There is an electric field due to some electron or sorry, your voice is cracking. Am I audible now? Yeah. What you're saying? Yeah, no, I was just saying that it's from 1 point to infinity for the electric potential and between 2 points for potential difference. Right. So 1 point to infinity, it will be defined as electric potential. And if we talked about 1 point to another point, we will say a potential difference. And we have also talked about that we can also define potential difference from going 1 point to infinity, and from that infinity to that point. Coming back. Coming to that. This was a potential difference. Yeah. And clear this thing. Then we have defined the electric potential mathematically. It is work done per unit charge, right? And to measure the electric potential, we have voltmeter. This circuit we will discuss today. Okay. And this is today's class. So let's come back to our board.
So today we'll start with electric current. So by now you got the idea that if a charge, if it is in motion, Mm. right, we will say that it is a current charge or electric current, right? Yeah, So, so the basic definition of electric current is that is charge is in motion. in motion, charge in motion. In terms of conductor, what we can say, for example, if we have a conductor of some length, like a metal rod, if there are charge or more than one charge, usually it is charges. Okay, if the charges are moving, if there is a flow of charge or charges in conductor, okay, that is also defined as your electric current. Yeah, Okay, in terms of conductor we're talking, and yeah. mathematically it is, Flow of charges across a conductor. sorry, Am I audible now? hey, you are audible, come again. What were you asking? The flow of charges across a conductor mathematically? Yeah, I was asking what is the magnitude of charge, what is the magnitude of current, sorry, not charge, what is the magnitude of current. So to calculate the current, we can say if there is an arbitrary area, it can be any area, okay. Mm. So electric current is how many charges are flowing. For example, there are electrons, okay. Yeah. So how many electrons are flowing through this particular area, that means how many electrons are crossing through this area in t time. So imagine there is this area, okay. What is area? For example, there is a circle and many electrons are passing through this circle, okay. Okay. So if we can calculate how many charge passed in, let's say, t time, that we will say that this is the magnitude of electric current. It is the flow uh, it is the flow of charges through any cross section of conductor in let's say 1 second or in t seconds, okay. For example, let me do it here more clearly. So mathematically your current is total charge passing in t time, or in 1 second. So let's say, so I can write in definition the magnitude of electric current in a Passing through a conductor. cross section. Sorry, you are very, hello. No, no. Yeah. So magnitude of electric current in a conductor is a is amount of electric charge passing through a given area, Cross. you can say in 1 second. Okay, and mathematically it is I equals to Q by C. So for example, if I say that if 1 coulomb of charge is passed in 1 second through some area,
and this area could be anything. Okay, for example, if I take very big area and your charges are just in one line. Okay, so you can take how much big and how small, it doesn't matter. The only thing matter is how many charge. For example, how many electrons are there? 1 2 3 4, right? So how many so what is the value of charge here? What is the value of charge for one electron? It is 1.6. Value of charge, Value of yeah, electron, charge possessed by 1.10 electron, raised to the power minus 19. minus 19. So how many total charge it possessed? You have to multiply with 4, right? So it is the Yeah, total charge it is passing. And if I say that it passed in 1 second, it take 1 second for all these electrons to pass through, then I will say my current is total charge, that is 4 into 1.6 into 10 raised to the minus 19 coulomb divided by in how many second it has passed? 1 second. one So this second. is the value of my current. Are you getting this? Yeah, So this is what I meant by when I said that the magnitude is defined as your charge per time. It is the rate of passing of charge through some area. Okay, and when I said that it doesn't matter that how big or small area, because even if I take very big area, it will take same amount of time, right? It doesn't affect the timing yeah. of this electron speed or something, right? Hmm. That's why the area doesn't matter. It is arbitrary. Okay, only thing it will matter only when, for example, we have very large, in a wide range we have electrons, and I'm asking only about this area, and these are just passing. Okay, now again I will calculate current only with respect to this area. How many electrons or how many charges have passed through this area in a given time, that will constitute your current. Yeah. Okay, so let's not get too much confused about this area. Okay, it's just like, any question regarding all this, No, it's no. right? Okay, so so again, what is the definition for 1 coulomb? Coulomb of charge is So coulomb, 1 coulomb of charge is, quantity sorry, of sorry, not electric not coulomb, charge. not coulomb, sorry, coulomb we have already defined. Okay, one more thing, what is the SI unit of current? Ampere. Ampere. And what else can you define it other than ampere? I'm just aware of ampere right now. Maybe it's subunits like microampere and milliampere. From this formula only we can derive one more unit. See, it's charge per time, and we know that what Yeah, is the unit for charge? It is coulomb, and for yeah, time it is second, right? yeah, So we can say coulomb per second is also a unit. yeah, What I meant. So you can call ampere or coulomb per second, but ampere is more of our SI unit. This is a derived one. Okay. Now my question is, what is 1 ampere? 1 ampere is equal to 1 coulomb per second. 1 coulomb per 1 second, right? 1 coulomb per Yeah, 1 second. So in terms of words, how can we define that 1 coulomb of charge? 1 coulomb of charge flows through any cross section. Okay, when I say cross section, it is the same thing as area, through a given area. Okay, so 1 coulomb of charge flows through any cross section. Let's say conductor of a conductor in 1 second. It's said to be your
1 ampere. Okay. Yeah. Now, how do we measure current? For example, for electric potential, we had voltmeter. Yeah. For measuring current, we have ammeter. Okay, Yeah. Meter. and Meter. okay, I want to talk this thing about in when I talk about circuit, but you have already done this chapter, so I will just make one remark here. So, for example, if there is a circuit and there is some resistance here, so there is a resistor, and for example, some wire is there, okay, and a current is flowing. So, to measure this current, you will put an ammeter here, okay. For example, you will put an ammeter here. So, what will this ammeter do? It will read how much current, The current flow how much through current. the yes. Your voice is cracking again. How much current is It flowing? will measure the amount of current flowing through it. Yes, right. So my question is, ideally, the resistance of this thing. We will talk about resistor later also. Ideally, there should not be any resistance here. Okay, ideally it should be zero, but we live in a practical world, so it offers some resistor. So while designing the ammeter, we have to be sure that it possesses very low resistance. Okay, so this is just one remark I wanted to add in the ammeter. It possesses Mm. should have Very low resistance. very low resistance. Why is that? So it cannot interrupt and kind of like if it has a higher resistance, then it will not be able to properly measure the flow of current. Right. But in precisely what will happen if there is some resistance here? Okay, for example, R prime is here. Now the it is also passing through this ampere, right? Ammeter, sorry, right? So what happens? Yeah. What was, for example, if originally the current is 5 ampere, now if you put this resistor, it will also contribute to this. It will also affect the reading of this. So actual value of this current, right? So if the resistance is high, then this new reading will be somewhat low. For example, 4.5 ampere. Okay. Yeah. So because we wanted to measure how much current is flowing, this is just to check, right? This we will just check Mm. and then we will remove it. So what will happen? It will give us the wrong reading because it's if it itself has some reading, it itself has some resistance, then this value will be affected. It can be low. It will be low. Yeah. That's why the resistance it should provide very low resistance. Okay. Mm. So this is the only point I wanted to mention here. That's why I draw this circuit. This is clear. Yeah. Then we can. I want to design some question. Now, if I say there are okay, there are 1500 electrons passing through 1 meter square of some area. Okay, in 20 minutes. Question is, what is the value of current? Can you do that? Yeah, I'll do that. Okay, take a minute.
Answers 120. 120 ampere. Yeah, Okay, how did you do that? So you applied this formula, right? yeah. So what is the charge here? Charge is 1500 electrons. Electrons. Charge is measured in coulomb, right? Yeah, coulomb, sorry. So what will you do? 1500. What is the charge for one Upon electron? 1.6, into 10 raised to power minus 19. right? I think you forgot to put this, right? Yeah. Yeah. This is very important. So if the question is asking that this much of electrons are passing, then always remember that to calculate the charge, you should know that one electron consists of this much of coulomb charge. Okay, so your total charge will be 1500 times the charge on one electron. Okay, so this is the total charge passing through 1 meter square of area, and this doesn't matter, it's just to confuse you, right? In this formula we don't need it because we have already told this. Now what is the time? 20 minutes. So you have to convert in Seconds. seconds. So yeah, seconds. Because remember, if you're writing your answer in amperes, so 1 ampere equals to coulomb per second. Okay, so you always have to convert this into second and this to the coulomb. Okay, otherwise you can't write ampere. Hmm. This is the time. So now it's pretty simple. So you have 1500 into 1.6 into 10 is from minus 19 divided by 20 into 60. So this is your answer after solving this. Okay. So one point I wanted to mention here, that you always have to write when we talk about something that this much of electrons are passing through. Always remember your charge will be n into e, where n is the number of electrons, right? And e is Yeah. the charge on one electron. Charge on charge on one electron, which is 1.6 into 10 to the minus 19. Okay, and this is negative, but right now we are only interested in terms of magnitude. That's why I'm not writing negative sign. Okay, so your current will be I by t, sorry, q by t, and your q is ne by q is ne, so your current is ne by t. This is all form. This thing clear? Yeah. Okay. So always remember, okay, don't forget next time. So you have to convert this into coulombs. Okay, moving forward. Now, next thing is so like in your home, okay, your current electricity is continuously there, right? So that means charges are flowing continuously. So how is that? How is that possible? So normally what we do, if we have an LED, okay, if we have an LED, okay, and it has two ends and are connected with some metal copper rods or copper wires, okay, and to to make it glow, what I have to do normally, this you have, I think you have done already, you will connect with some battery. Yeah. Why? So that'll provide the flow of charges. It'll contain a set of charges and which when the switch is pressed on, they'll flow and provide the current. Now my question is, what exactly the battery doing, what is it providing? Okay, Providing uh, charges to the circuit. charges. Okay, Electricity. okay, uh, to answer this question, okay, let me talk to you about your home. Okay,
You're sitting in a room, Yeah. right? So there is a bulb mounted on your wall, okay, and your switch is here somewhere. Now as soon as you press this switch, this light bulb glows, okay, within fraction of second. So you are saying, for example, forget about your power plant or something. For example, there is a battery here, okay. Now you're saying it is providing charge, okay. So if your statement is true, that means this charge has to, for example, this is the wire is growing like this, okay. So if your statement is true, that means this charge will travel all this distance and reach here, and then only it will grow. That's what you're saying. No, it'll maintain that. It will It's maintain on the charges. both of the ends. Yeah. That's what I'm asking, that it will continuously provide the charge. That's what you're saying. Yeah. Okay. So what about, we have talked earlier, when we talked about conductors, I said that there is a, for example, free electrons are there, right? Yeah. Free electrons are there. And uh, and we have discussed that the flow of these electrons, which are already present here, this is what constituting your current, right? We have established that, Yeah. because current is just a flow of electrons, and we are saying the electrons are already there. You just have to push them, right? Yeah. So this battery is not providing any new charge or something. It can provide, okay, but in this scenario, or in most of the scenarios, in this scenario also, the battery, the function of a battery is to provide that force, okay, to provide that potential. Why and how? Because we have also talked about electric potential and potential difference. So if I put an electron, right, or put a charge in the electric field, what happened? For example, there is another electron. What will happen? It will start moving here. Yeah. Why? Because there is a repulsion, first of all, right? Mm. Right or no? There's Yeah. due to repulsion they will start moving. Or I have also told you that not only because of electron, from any source, if it is providing some electric field, right, it has some potential to move. It has some potential to move, right, to the infinity, because at the infinity the potential is zero. The same concept is happening here. What battery is providing, I battery. hear you for the past like a minute or so. It suddenly blanked out. Sorry, what happened? You didn't hear me for I the. couldn't hear you. Okay, okay. What I was saying, that if an electron is present in some electric field, it will experience some force, right? And it will start moving. Yeah. That happened when we talked about electric potential and Yeah. potential difference. Mm. Similarly, your battery will also provide this force. Okay, that means it is providing some kind of potential gradient. Okay, your electron or your charge will only move from high potential to low potential. Yeah. This example we have already seen here, because potential it will start moving to infinity, because infinity the potential is zero. That means the Yeah. lowest. Okay. So if we have 2 points A and B, this example in the previous example we have done, right? We have told that it is at 128 volt. If point B is at 180 volt, the charges will move from A to B. That is from high potential to lower potential. So what this Yeah. battery is doing, it is creating that potential gradient. Okay, it is creating potential gradient. That means a potential difference it is maintaining, and it will continuously doing so by some chemical reaction which is happening inside the battery.
So it is not providing, anyway, it is providing charge also in some way when we talk about battery in detail, but now it's not a good point to start that topic. So you can say it is mostly providing some potential gradient. For example, if potential here is V1, it will provide some another potential V2, and if V1 is greater than V2, then your positive charge will start moving from here to here. Okay, why? Because it is at higher potential and it is at lower potential, so it will start moving from. Any doubt? और या थोड़ा और डिटेल में बताऊं इसको, थोड़ा और डिटेल में कर लेते हैं, राइट? elaborate कर देता हूँ मैं थोड़ा सा, थोड़ा और सिंपली कर देते हैं। अभी तो हमने बहुत ज़्यादा वहाँ पे केओस मचा दिया, तो बहुत सिंपल कर देते हैं. सो वी हैव अ कंडक्टर एंड वी हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स. ओके, इलेक्ट्रॉन्स और चार्ज मूव फ्रॉम, इस पॉइंट पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? इट मूव्स फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल. इस पे कोई डाउट है? नो. ओके, सो अभी रोड सिंपल ऐसे रखिए, मैंने किसी बैटरी से अटैच नहीं करा, तो क्या होगा? ये रैंडमली तो होगा क्या, ये सब रैंडमली एक दूसरे से टकराते रहेंगे. ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, आपस में टकराएंगे, वॉल से टकराएंगे. ओके, सो एक डेफिनेट डायरेक्शन नहीं है. जब आपके पास एक डेफिनेट डायरेक्शन नहीं है, तो अगर मैं किसी भी एरिया, इस एरिया में देखना चाहूँ कि इस एरिया में कितने इलेक्ट्रॉन्स पास हुए हैं, तो क्योंकि रैंडम है तो ऑलमोस्ट जीरो ही आ जाएगा, क्योंकि 10 इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं तो 10 इलेक्ट्रॉन इधर भी जा रहे होंगे, राइट? रैंडम होगा तो कोई करंट प्रोड्यूस नहीं होगा, क्योंकि करंट क्या कहता था कि कितने इलेक्ट्रॉन्स एक एरिया से पास हो रहे हैं. ओके, वो एक डायरेक्शन में भी होने चाहिए. ठीक है, तो अगर मैंने इस रोड को या इस वायर को किसी से कनेक्ट नहीं करा, तो यहाँ पर करंट क्या होगा? जीरो. ये बात क्लियर है? या. ओके, नाउ सॉरी, अब एक नेक्स्ट केस लेते हैं जिसमें आपकी जो रोड है, ठीक है, एक पोटेंशियल ग्रेडियंट बना रही है. दैट मीन्स लेट्स से यहाँ पर हाई पोटेंशियल है और यहाँ पर लो पोटेंशियल है, तो अब क्या होगा? हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल मूव करने लग जाएगा. हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल मूव करने लग जाएंगे, लेकिन वो पॉजिटिव चार्ज के केस में होता है. ओके, ये जो मैं बोल रहा हूँ चार्जेस मूव फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, तो ये चार्ज जो होना चाहिए यहाँ पर क्या होना चाहिए? पॉजिटिवली चार्ज्ड. ओके, ये बात और याद रखना. ठीक है, अभी मैं अज्यूम कर रहा हूँ ये पॉजिटिवली है, सिर्फ चार्जेस की बात कर रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन्स छोड़ दो. तो ये होगा क्या? हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की साइड मूव करेगा. तो अब क्या होंगे? सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स कहाँ मूव करने लग जाएंगे? इधर. या. और एक्चुअल में कहाँ करेंगे? अपोजिट. अगर ये पॉजिटिव, सॉरी मैं दोबारा से कंफ्यूज कर रहा हूँ तुम्हें. अगर पॉजिटिव चार्ज होता तो V1 से V2 मूव करते, राइट? क्योंकि V1 ज्यादा पोटेंशियल पे और V2 लेस पोटेंशियल पे. लेकिन चार्ज क्या है? नेगेटिवली चार्ज है, तो उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी? ऑपोजिट. ओके, सो जो मेन पॉइंट है कि आपके पास एक पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए चार्ज को मूव कराने के लिए. ये बात क्लियर है? या. तो उसके लिए हमारे पास क्या है ऑप्शन? हमारे पास है बैटरी. ओके, तो बैटरी के दो टर्मिनल्स हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव. ओके, अब ये पॉजिटिव पॉइंट है और नेगेटिव पॉइंट है, ये समझ लो यहाँ पे बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर नेगेटिव. ओके, एक तरह से एज्यूम करने को बोल रहा हूँ बस. तो अब ये बताओ कि एक इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज के पास जाएगा या नेगेटिव चार्ज के पास जाएगा? पॉजिटिव चार्ज. पॉजिटिव चार्ज के पास जाएगा. तो ये सारे इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे मूव करने स्टार्ट कर देंगे? कौन सी डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में, क्योंकि यहीं से आएगा पॉजिटिव पे. हाँ, राइट. दूसरा ये भी कह सकता हूँ ये नेगेटिवली चार्ज है तो इसको रिपेल करना स्टार्ट कर देगा. यस. ओके, तो बैटरी का यही काम है. क्या काम है? कि एक तो पोटेंशियल डिफरेंस को क्रिएट करना,
ओके और इसके अंदर कुछ केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं जिसकी वजह से मतलब ऐसा ना हो ना कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ चले गए और एनहाइलाइट कर दिए, राइट? एक पॉजिटिव और नेगेटिव मिलके जीरो बना देगा ना, ठीक है? तो अब इस डिटेल में नहीं जाते इतना केमिकल रिएक्शन में। तो ये बात क्लियर है कि एक पोटेंशियल डिफरेंस इज नीडेड फॉर द इलेक्ट्रॉन्स टू मूव इन अ सर्टेन डायरेक्शन इन कंडक्टर्स, ओके? या तो इसका सिंबल, इसको और नाम से इसका जो सिंबल बना देते हैं। तो यहाँ पर इस केस में, फर्स्ट केस में क्या हो रहा है, फर्स्ट केस में आपके इलेक्ट्रॉन्स रैंडम जा रहे हैं, मैं डायरेक्शन बना रहा हूँ, सी सिंपल रैंडम डायरेक्शन है ना? तो ये हमारा फर्स्ट केस हो या गया जब बैटरी से कनेक्टेड नहीं है। सेकंड केस आपका क्या हो गया, जब आपका बैटरी से कनेक्टेड है, ओके? तो सारे के सारे, और बैटरी में क्या है, लेट्स से एक सेल है, ओके? ये सेल का पॉजिटिव पॉइंट होता है और ये नेगेटिव, ये सिंबल्स हम करेंगे डिस्कस अभी। तो अब क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाएंगे, इस डायरेक्शन में, ये वाला इलेक्ट्रॉन भी इस डायरेक्शन में, ये इलेक्ट्रॉन भी इस डायरेक्शन में, राइट? सारे के सारे किस डायरेक्शन मूव या करने लग जाएंगे, सेम डायरेक्शन, पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव, में। ठीक है? ये क्लियर है? तो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन एक तरफ हो गई। अब यहाँ पर एक और पॉइंट है, यहाँ पे जो करंट की डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन की हमेशा अपोजिट होती है। तो करंट की डायरेक्शन कहाँ हो गई, फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, दिस इज हाई पोटेंशियल एंड दिस इज लो पोटेंशियल, या पॉजिटिव टू नेगेटिव भी कह सकते हो, ओके? अब क्वेश्चन ये समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ, करंट की डायरेक्शन, सो डायरेक्शन ऑफ करंट is opposite to direction फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। of flow of electrons। इसका रीज़न ये है कि जब करंट की डिस्कवरी हुई थी तब ये इलेक्ट्रॉन्स का कंसेप्ट इतना क्लियर था नहीं, ओके? तो उस टाइम पे कोई भी एक डायरेक्शन हमें लेनी थी, ठीक है, साइंटिस्ट को, तो उन्होंने कोई एक आर्बिट्ररी डायरेक्शन बोल दी, ओके ये पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो करेगा। लेकिन जब फिर पता चला कि ओके इलेक्ट्रॉन्स हैं तो और इस डायरेक्शन मूव करते हैं, तो लेकिन अब ये इतना ज़्यादा यूज़ हो चुका था कि बार बार इसको चेंज करना ईजी नहीं था, तो उन्होंने केवल सिंपल ही कर दिया कि ओके हम हमेशा डायरेक्शन करंट की पॉजिटिव टू नेगेटिव ही लेंगे, और जबकि एक्चुअल में फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहा है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। ये पॉइंट क्लियर है? या ओके आगे बढ़े, अब तो कोई डाउट नहीं है, एक्सप्लेन हो गया सारा, नहीं। क्लियर? यस। ओके अब आते हैं हम इलेक्ट्रिक सर्किट्स पे। सो व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक सर्किट, इट इज अ कंटिन्यूअस पाथ, डिफाइन कर देता हूँ मैं, इट इज अ कंटिन्यूअस पाथ, So closed and continuous path of electric current. क्लोज्ड एंड कंटिन्यूअस पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, राइट? ये भी कह सकते हैं, राइट? सो क्लोज्ड, ये लिख लेते हैं, क्लोज्ड एंड कंटिन्यूअस पाथ, सॉरी बहुत ठीक से वर्क नहीं कर रहा, क्लोज्ड एंड कंटिन्यूअस पाथ along which, मैं आप ही की डेफिनेशन लिख रहा हूँ, along which Electric current moves. electric current flows। ओके तो सबसे सिंपलेस्ट तो हमें पता ही है कि एक बैटरी हो गई, राइट? बैटरी एक मेटल वायर है और एक एलईडी या बल्ब से जुड़ी है, उसके अलावा हमारे पास और क्या हो सकता है, स्विच हो सकता है, Yes. right? एक ऑन ऑफ स्विच हो सकता है, इसका क्लोज नहीं करनी, बहुत गंदा डायग्राम बना है बट कोई बात नहीं, ठीक है? क्लियर है इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है? तो इसके कुछ कंपोनेंट्स होते हैं हमारे पास, कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं? So we have some symbols of electric component। अच्छा मैं ज़्यादा स्लो या फास्ट जा रहा हूँ तो बता दो मेरे को, ऐसा कुछ है क्या? No, it's fine. फाइन, ओके। जब भी ऐसा लगे कि ज़्यादा स्लो हो रहा है कि
ये सब पता है और मैं ओवरली बता रहा हूँ तो मेरे को बता देना, या फिर ऐसा लगे क्योंकि कुछ स्किप हो रहा तो प्लीज़ एनी टाइम इंटरप्ट कर देना। ओके ओके। ओके, सिंबल्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो सबसे पहले हमारे पास है सेल। आई गेस ये स्लाइड से पढ़ लेते हैं, स्लाइड में आई गेस अच्छे से लिखा हुआ है। तो स्लाइड पे हम आ जाते हैं। बहुत स्लो हो गया मेरा लैपटॉप इस टाइम पे। कैन यू सी द स्लाइड? यस। ओके, ये हमने डिस्कस कर दिया कि एक्चुअल करंट, एक्चुअल फ्लो ऑफ करंट और कन्वेंशनल डायरेक्शन ये क्या होती है, डिफरेंट होती है। इलेक्ट्रॉन की होगी हमारी नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल, और करंट की होगी पॉजिटिव टू नेगेटिव। नेगेटिव। और ये भी क्लियर हो गया। अगर स्विच ऑफ है, ओके, ये इलेक्ट्रिक सर्किट हो गया हमारा, तो अगर बैटरी से कनेक्टेड नहीं है तो इट विल बी अ रैंडम मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और अगर स्विच ऑन कर दिया तो आपका क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स एक डायरेक्शन में फ्लो करेंगे और करंट की डायरेक्शन अपोजिट होगी। ओके, या। और this is again your electric, this is your circuit, okay, closed and continuous path of flow of electrons. These are okay. तो फर्स्ट जो है इसको एनोटेशन ऑन कर देता हूँ मैं। तो फर्स्ट इज योर सेल। ओके, सेल और बैटरी में क्या डिफरेंस है? मोर देन वन सेल विल कंस्टिट्यूट अ बैटरी। ओके, 2 3 4 Cell is एनीथिंग। a single unit. सॉरी, Cell is like a single unit of that potential yes, of a difference. battery or yeah, potential. Yeah. Then we have a connecting wire, उसको symbol क्या है? Just a straight line. Okay, and if we have a joint wire, for example आपका कोई circuit है, right, इस तरीके से, और वो आगे दो में divide हो रहा है, okay, and you are saying that it is joint, so it is a wire joint, that means कि division आ रहा है। okay. और कई बार हो सकता है कि आपको डिवीजन नहीं बनाना, फॉर एग्जांपल आप एक सर्किट बना रहे हो और एक वायर यहाँ से जा रही है, अब कंफ्यूजन हो सकती है कि ये वायर जॉइंट है या इसके ऊपर से क्रॉस हो रही है, तो इसलिए हमने ये दो डिफरेंस बनाया कि वायर जॉइंट है तो आप एक बड़ा सा डॉट लगा दें सो दैट क्लियर हो जाए, और अगर वायर जॉइंट नहीं है तो क्या करो, इस तरीके से कर्व बना दो कि इट इज पासिंग ऑन टू दैट। ओके, ये इनके बीच में कोई कनेक्शन नहीं है। सिमिलरली वी हैव अ रेसिस्टेंस, ओके, फिक्स्ड रेसिस्टेंस, तो ये हमारा रेसिस्टर हो गया, और एक होता है हमारा वेरिएबल रेजिस्टर। इनके दो सिंबल्स हैं, आई गेस ये थोड़ा बेटर लग रहा है, इजी है बनाना। तो वेरिएबल रेजिस्टर या रियोस्टेट क्या है कि इसमें हम रेजिस्टेंस की वैल्यू, यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू फिक्स रहती है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। ओके, फॉर एग्जांपल जो आपको मार्केट में या आपकी लैब्स में देखा होगा, 5 ओम के रेजिस्टर्स होंगे, 10 ओम के रेजिस्टर्स होंगे, 10 किलो ओम के रेजिस्टर्स होंगे, राइट। तो अगर इस टाइप के रेजिस्टर्स आप अपने सर्किट में लगा रहे हो तो आप ये सिंबल यूज करोगे, दैट मीन्स ये फिक्स्ड है, ये चेंज नहीं हो सकते। और एक हमारे पास एक डिवाइस होती है रियोस्टेट। ओके, ये कुछ इस तरीके से दिखती है, अगर आपने अपनी लैब्स में देखा है नहीं देखा, इस टाइप की एक होती है, बहुत सारी इसमें वायरिंग होती है। ओके, ये इसके एंड्स होते हैं। तो ये होता है हमारा रियोस्टेट्स। ओके, इसको हम चेंज करके रेजिस्टर की वैल्यू चेंज कर सकते हैं, 0 to 1000 किलो ओम्स और ओम्स, बहुत ज़्यादा, मतलब डिपेंड अपॉन कौन सी डिवाइस आप यूज़ कर रहे हो एग्जैक्टली, या उसकी क्या यूनिट्स हैं। तो ये हो गया हमारा वेरिएबल रेजिस्टर। सिमिलरली ये हो गया हमारा एमीटर, अभी आपको सर्किट पे दिखाया भी था। एमीटर जस्ट आपको ए लिखना है और उसका भी आपका पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल है। ओके, तो याद रखो इसका पॉजिटिव और नेगेटिव किस तरह से लगाना है। जैसे अगर हमारे पास एक सेल है, ओके, यहाँ से एक रेजिस्टर जा रहा है, तो ये पॉजिटिव है तो आपको यहाँ पे पॉजिटिव लगाना होगा, ओके, और यहाँ पर नेगेटिव। और अदरवाइज एमीटर में कुछ पॉजिटिव नेगेटिव होता नहीं है, ये सिर्फ बताने के लिए कि करंट का फ्लो मतलब हायर पोटेंशियल यहाँ पर है और लोअर पोटेंशियल यहाँ पर है। वरना आप अगर आप एमीटर देखोगे असली में डिवाइस में, वहाँ पे सिर्फ वही दो वायरिंग ही निकली है, ओके, जो आप लगा सकते हो। Similarly, we have a voltmeter, okay, same concept, and we have a galvanometer. Galvanometer क्या होता है? It is just to detect any current. It is just to detect current. ये मेजर नहीं करेगा करंट की वैल्यू। हो सकता है कि
हमें जैसे Just बहुत check the presence of current. राइट कि कई बार हमें बस ये देखना होता है कि यहाँ पे करंट फ्लो हो, मतलब कुछ करंट तो नहीं आ रहा, हम चाहते हैं कि यहाँ पर कोई करंट नहीं आना चाहिए, कहीं से कोई शॉर्ट सर्किट ना हो गया क्योंकि जिसकी वजह से करंट डिवाइड हो रहे हैं, तो वहाँ पे हम गैल्वेनोमीटर से चेक कर सकते हैं कि अगर ये डिफ्लेक्ट हो रहे हैं तो इसमें करंट है। और इसका एक और यूज ये कर सकते हैं क्योंकि गैल्वेनोमीटर में भी ऐसी रीडिंग होती है, एक नीडल होगी, ओके, वो इस साइड भी मूव कर सकती है और इस साइड भी, तो डिपेंडिंग अपॉन वो किस डायरेक्शन में मूव कर रही है उस समय पता चल जाता है कि करंट की डायरेक्शन क्या है। तो इसके दो पर्पस हैं, एक तो करंट है या नहीं और एक करंट किस डायरेक्शन में। क्लियर? देन वी Yes. हैव अ ओपन स्विच। ओके, आप इसको इस तरीके से भी ड्रॉ कर सकते हो, इस तरीके से कर सकते हो, दिस इज इजी। ओके, क्योंकि ये बनाते टाइम पेन से बना रहे हो तो कई बार टच हो जाते हैं और बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है। और क्लोज स्विच को इस तरीके से भी दिखा सकते हो और इस तरीके से भी, और एक और तरीका होता है हमारा बेसिकली ये, दैट मीन्स ये क्लोज्ड। तो अभी आपके एनसीईआरटी में नहीं है ये, तो मत यूज करना, जस्ट आपकी नॉलेज के लिए बता दिए कि एक और सिंबल होता है, बेस्ट वे टू यूज दिस। ओके, अदरवाइज इसमें भी आप कंफर्टेबल हो। देन वी हैव इलेक्ट्रिक बल्ब, तो उसके भी दो तरीके से। क्लियर? यहाँ कोई डाउट? No. क्लियर कर देते हैं इसको। ये हमारे पास एक इलेक्ट्रिक सर्किट हो गया। ओके, सी जो मैं बता रहा था क्लोज वाला, तो ये तो बहुत फैंसी वे में दिखा रखे हैं। ओके, इसको आप नॉर्मली वैसे भी दिखा सकते हो जैसे मैंने बताया था, एरो बना के। तो नॉर्मल सर्किट हो गया। अब यहाँ पर आप देख सकते हो इस जगह हमारे पास क्या क्या है, एक सेल है, स्विच क्या है, ऑन या ऑफ? On, off. Sorry, I mean. इट्स ऑन, अगर डॉट है तो ऑन है। ओके, Alright. सी, अगर डॉट है तो ऑन है। और ये सिंबल भी कैसे आया, ये आपकी लैब्स में इस तरह के स्विचेस भी अवेलेबल होते हैं। ओके, यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, इस तरह के स्विचेस होते हैं कि एक यहाँ पे एक होल टाइप होता है। ओके, इसमें से वायर जा रही होती हैं और आपके पास एक मेटल रोड और उसके ऊपर प्लास्टिक नॉब होती है। तो ये चीज़ आप इसमें आप इंसर्ट करोगे तो क्या होगा, कनेक्शन कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि ये मेटल है और ये मेटल वायर्स है, राइट? तो कनेक्शन कंप्लीट करने के लिए क्या चाहिए आपको, कुछ मेटल चाहिए, ठीक है? तो ये उसी से इंस्पायर्ड है ये सिंबल, कि अगर आपके पास अगर यहाँ पर आपने नहीं इंसर्ट करा ये मेटल नॉब तो ये ओपन हो गया, और अगर करा है तो आप एक डॉट लगा दो कि वो क्लोज हो चुका है। और करंट कब फ्लो होगा, जब ये क्लोज होगा। ओके, तो हमारे पास सेल है, हमारे पास कनेक्टिंग वायर्स हैं, हमने एमीटर लगा रखा है यहाँ पर, और उसके बाद हमारा रेजिस्टर है, और रेजिस्टर के पैरेलल में ही वोल्ट मीटर लगता है। क्यों लगता है ये बता सकते हो? एम मीटर हमेशा सीरीज में लगता है और वोल्ट मीटर हमारा, Voice is cracking in between. सॉरी, Your voice is not properly audible. It's cracking in between. अभी ऑडिबल है? Yeah. अभी मैं माइक पास में रखता हूँ थोड़ा। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि एमीटर सीरीज में लगाते हैं और वोल्ट मीटर पैरेलल में, कैन यू टेल मी व्हाई? ओके, अगर सिर्फ वोल्ट मीटर की बात करें, वोल्ट मीटर क्या मेजर करता है? Potential difference. पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, तो अगर मेरे को जानना है कि इस रेसिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस किसी के अक्रॉस ही मेजर कर सकता हूँ, है ना, दो पॉइंट्स के। तो मेरे को इस रेसिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है। तो अगर मैं वोल्ट मीटर यहाँ लगा दूंगा तो यहाँ तो मेरे को कुछ देगा नहीं, क्योंकि वो तो ये पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में देगा, तो ये तो जीरो रीडिंग आएगी, राइट? इसलिए अगर मेरे को इसके अक्रॉस जाना है तो मेरे को एक वायर यहाँ लगानी होगी और दूसरी वायर यहाँ पे, तब जाके मैं बता सकता हूँ कि इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। तो ये क्या है, ये कॉम्बिनेशन किस तरीके का है, पैरेलल है या सीरीज है? ये इसके पैरेलल है, राइट? सो दैट्स व्हाई वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में लगाते हैं। और एमीटर सीरीज में क्यों लगाते हैं? क्योंकि वो तो तो उसके वो थ्रू डायरेक्ट. पास होता है। यस, क्योंकि वो तो करंट तो उसके थ्रू पास करवाना है हमें। Yeah. ओके,
और आगे चल के जब थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे रेजिस्टर के बारे में, तो एक और क्वेश्चन आएगा कि वोल्ट मीटर की जो रेजिस्टेंस है वो हाई होनी चाहिए। हमने एमीटर में पढ़ा था कि इसकी क्या होनी चाहिए, लो होनी चाहिए, या और वोल्ट मीटर की हमारी हाई होनी चाहिए। मैं आगे बताऊंगा, अभी नहीं, ठीक है, जस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट। Okay, now come back to our slides. Do we have time? Do we have time to our whiteboard? Okay, this thing is already clear, so you were telling. यहाँ तक कोई डाउट? नो। क्वेश्चन कराना चाहता था, बट फिर टॉपिक कवर नहीं हो पाएगा, तो बेटर मैं टॉपिक एक बार इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। ओके, और जब ट्यूटोरियल्स करेंगे तो हम न्यूमेरिकल से प्रैक्टिस करेंगे वहाँ पर। तो नेक्स्ट टॉपिक इज, जस्ट मैं इंट्रोड्यूस करा देता हूँ, काफ़ी थोड़ा लेंथी हो सकता है टॉपिक। सो वी हैव ओम्स लॉ। व्हाट इज ओम्स लॉ? Relationship between the potential difference across a conductor and the current, that is when we switch it on, when it is passed through it. Right, and what is that relation? So it says the current flowing through the conductor is directly proportional to your potential difference across the end. What does it mean? So for example, we have a circuit and we have a cell, right? So it is providing a potential difference, and due to this potential difference we have some flow of electrons, and that means we have some current. Now Ohm's law said that if you increase this potential difference, it will also increase your current in the same proportion, and if you decrease that potential, your current will also decrease in the same proportion, right? That means I is directly proportional to your V. Okay, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, V is directly proportional to I also. Yes, are you with me? Yes. Okay, so this is a simple one line statement. What is the Ohm's law? That the potential that the current is directly proportional to the your potential difference which is applied. Okay, so V is directly proportional to I, and अगर आपको उसका relationship लिखना है, so we can say V equals to R into I. And what is this R? This is proportionality constant. So proportionality constant. Okay, क्योंकि अभी क्या था, अभी तो प्रोपोर्शनल था कि मैं इंक्रीज कर रहा हूँ तो इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज कर रहा हूँ तो डिक्रीज कर रहा है, बट व्हाट इज द एग्जैक्ट वैल्यू? तो वो किस, उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, हमें कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना होता है, एंड दिस कांस्टेंट इज योर रेसिस्टेंस. दिस कांस्टेंट इज योर रेसिस्टेंस. ठीक है, तो इसको अदर वर्ड्स में क्या लिख सकता हूँ, V is directly proportional to I. इसका मतलब V divided by I will always be constant. ओके, प्रोपोर्शनलिटी को इस तरीके से भी इंटरप्रेट कर सकते हैं, क्योंकि देखो जितना बढ़ा रहा हूँ उतना ही बढ़ रहा है ना? तो अगर मैं फॉर एग्जांपल इसको इस तरीके से देखो, अगर 2 वोल्ट था तो लेट्स से 2 एम्पियर करंट है, मैंने इसको 4 वोल्ट कर दिया, डबल कर दिया, तो मेरा करंट भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, दैट मीन्स 4 एम्पियर हो जाएगा. इसको मैं क्वाड्रुपल कर दूं तो वो भी उतने टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो हो क्या रहा है, अगर ध्यान से देखो, इन दोनों को डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा मेरा, 2/2 is 1, 4/4 is 1, 8/8 is 1.
दिस इज व्हाट आई मेंट बाय कि अगर प्रोपोर्शनल हो तो इसका मतलब उनको आप जब डिवाइड करोगे इट विल गिव यू सम कांस्टेंट, कांस्टेंट है ना, कभी चेंज नहीं होगा। और यहाँ पे उस कांस्टेंट को मैंने नाम क्या दिया है या फिर क्या है वो, इट इज रेसिस्टेंस, इट इज रेसिस्टेंस। Resistance. क्लियर? Yeah. ओके, तो यहाँ से 2 पॉइंट्स और आ जाते हैं। फर्स्ट, ये तो है ही, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, एक और आ जाता है कि करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। कह सकता हूँ मैं, जितनी Yes. ज़्यादा रेजिस्टेंस होगी, क्यों, V इक्वल्स टू आई आर है, तो I क्या हो गया, I इक्वल्स टू V बाय R हो गया। Uh, ठीक है, तो दैट मीन्स I is directly proportional to V and also it is inversely proportional to R. तो रेजिस्टेंस जितनी ज़्यादा होगी उतना कम करंट होगा। ठीक है, yes. so this is ohms law, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। बाकी ग्राफिकली अभी बताऊंगा। उससे पहले हम डिस्कस करते हैं थोड़ा सा रेसिस्टेंस। व्हाट इज रेसिस्टेंस? फॉर एग्जांपल ऑफ अ कंडक्टर, कंडक्टर के रिस्पेक्ट में रेजिस्टेंस क्या है और ये कहाँ से आई है। ओके, दोबारा से अपने फंडामेंटल्स पे आ जाते हैं। हमारे पास एक कंडक्टर है और उसमें इलेक्ट्रॉन्स थे, है ना, Mm. फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, यस नो। Yes. अभी हमने इसको बैटरी से कनेक्ट करा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स विल मूव In the direction of the positive charge. राइट, पॉजिटिव टर्मिनल, ओके, इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव टर्मिनल। सो और करंट की डायरेक्शन तो यहाँ पर होगी। अब ये सोचो कि ये मूव कर रहे हैं, ओके, अभी तुम्हें लगता है यहाँ इस मेटल में सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स हैं या कुछ और भी हैं? There are protons and neutrons as well. यस, दैट मीन्स एटम्स आर ऑलरेडी देयर, राइट। सो वो क्या है, वो फिक्स्ड है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स, इसको मैं एटम बोल रहा हूँ, लेट्स से, राइट। एटम तो आपके हैं ही। Hmm. अब लेट्स से एक और लेयर बना देता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा, कलर चेंज कर लेते हैं। नाउ इमेजिन आपने पोटेंशियल डिफरेंस बनाया, तो ये किस डायरेक्शन मूव करेगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर जाना चाहते हैं इस डायरेक्शन में, अब ये जा रहे हैं और ये इससे टकरा गया, ओके, तो क्या होगा, थोड़ा सा क्या Beta होगा, obstruction. थोड़ा सा ये रिबाउंड होगा, क्योंकि Hmm. इलास्टिक कोलिजन पता ही है, जब चीज टकराती है तो थोड़ा सा Uh, बैक करती है ना। उसके बाद अभी भी hmm. इसको फोर्स कहाँ लग रही है, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस तो हटाया नहीं मैंने, ये दोबारा आगे जाना चाहेगा, गया इससे Hmm. टकराया, फिर इससे टकराया, टकरा रहे हैं, इधर टकरा रहे हैं, ठीक है, हो सकता है और इलेक्ट्रॉन्स हैं उनसे भी टकरा रहे हैं, तो ये टकराते टकराते पहुंच रहे हैं। ये ऐसा नहीं कि सीधी लाइन में पहुंचता रहेगा, बिकॉज देयर आर बिलियंस ऑफ एटम्स आर देयर, ओके, सो इट विल कोलाइड with every atoms, not every atom, with everything in their path, right? तो ये zigzag motion की टर्म्स में यहाँ पर बेचारा पहुंचेगा, ठीक है। तो अगर तो ये रेसिस्टेंस, इसको कहते हैं कि इसको ही रेसिस्टेंस कहते हैं, दैट मीन्स ऑब्स्ट्रक्शन, दिस इज ऑब्स्ट्रक्शन। तो अगर ये ऑब्स्ट्रक्शन किसी केस में ज्यादा होती है, किसी केस में कम होती है, ओके, तो अगर तो ये ऑब्स्ट्रक्शन ज्यादा है तो हम कहेंगे रेसिस्टेंस इज हाई, रेजिस्टेंस इज हाई, और अगर ये ऑब्स्ट्रक्शंस कम है तो हमारी रेजिस्टेंस की वैल्यू भी कम हो जाती है। ये पॉइंट क्लियर हो रहा है? Yes. ओके, तो ये किस वजह से होता है, क्योंकि बहुत बहुत चीज़ों पे डिपेंड करता है कि आपने मेटल कौन सा लिया है, कॉपर लिया है, गोल्ड लिया है, ठीक है, तो डिफरेंस आएगा। क्यों? क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी इसमें मैटर करेगी, क्योंकि Hmm. एटम्स के पास प्रोटॉन तो है ही, ठीक है, चाहे आप पोटेंशियल डिफरेंस दे रहे हो लेकिन ये इलेक्ट्रॉन यहाँ इसके पास पास भी तो जाना चाहेगा, यस और नो। तो हो सकता है Yes. वो सीधा ना जाके इसके पास से होता हुआ गुजरे, तो ये क्या हुआ, ये फालतू का डिस्टेंस चला, तो ये क्या करेगा, एक तरह की ऑब्स्ट्रक्शन ही तो हुई, क्योंकि ये इजीली जाता Hmm. तो स्पीड तेज होती, सब कुछ तेज होता, तो करंट की वैल्यू भी तेज होती, लेकिन ये अब घूम फिर कर आ रहा है तो करंट की वैल्यू पहले से थोड़ी कम होनी चाहिए, ठीक है।
तो दिस ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से हमारी ये रेजिस्टेंस आती है. सो व्हाट इज रेजिस्टेंस? अगर इसको मैं टेक्निकली प्रॉपर स्टेटमेंट दूं तो द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर, so resistance is property of conductor due to which it opposes Flow of electrons through it. the flow of current. Clear है ये? ये डेफिनेशन क्लियर है? Yes. ओके, तो समझ में आ गया रेजिस्टेंस कहाँ से आ रहे हैं, है ना? तो ये डिपेंड करेगा बहुत सारी चीज़ों पे जो आगे डिस्कस करेंगे एग्जैक्टली किस पे, लेकिन सबसे पहले तो डिपेंड इसी पे कर रहा है कि कंडक्टर कौन सा है. इंसुलेटर के केस में तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है, लेकिन हमारे पास सेमी कंडक्टर्स हैं, उसमें ज़्यादा होता है. ये करेंगे डिस्कस अच्छे से. सो अभी जो आपका रेसिस्टेंस है, ओके, और बात करते हैं रेसिस्टेंस की ऐसा यूनिट. तो हमारे पास इसकी ऐसा यूनिट है, दैट इज, टेल मी What? व्हाट इज द ऐसा यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस? SI unit for resistance is, ओम. if I am not wrong, it's ohm. इट्स ओम. ओके, और ओम का सिंबल है ये, It's omega symbol. राइट, कैपिटल ओमेगा. ओके, सो रेजिस्टेंस इज ओम. और क्या लिख सकते हैं? बिकॉज V इज इक्वल टू आई आर. सो आर क्या हो जाएगा? V अपॉन आई. V upon और V किस में? वोल्ट्स में है, तो इट इज वोल्ट volt पर on ampere. एम्पियर माइनस. ओके, तो अगेन मेरे को अगर 1 ओम डिफाइन करना हो तो मैं कैसे डिफाइन करूंगा? सो 1 1 ohm is ओम equal इज, to 1 या, volt upon 1 it is the ampere. resistance of conductor. It is the resistance of conductor such that when, how much? 1 volt, 1 volt 1 of volt. potential difference is applied. किस पे अप्लाई कर रहे हैं? कंडक्टर के एंड पे. अप्लाइड एट द एंड्स ऑफ कंडक्टर and a current of 1 ampere, right, is flowing through this. Flows through. तो देख रहे हो, जब मैं डिफाइन कर रहा हूँ 1 कूलम या 1 ओम, और इससे पहले क्या करा था हमने? 1 एम्पियर डिफाइन करा था. तो हमेशा उसके जो करस्पॉन्डिंग है वो फॉर्मूला लिखो और उन सब की वैल्यू 1 कर दो. ओके, और उसको फिर स्टेटमेंट में लिख दो. ओके, दिस इज अ वन वे टू रिमेंबर ऑल्सो, और टू अंडरस्टैंड कि जब हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं तो हम कंप्लीटली न्यूमेरिकल्स की बात कर रहे हैं. ओके, ये यहाँ पे कुछ फिजिक्स नहीं है, इट इज जस्ट नंबर्स और सिर्फ न्यूमेरिकल. कि 1 ओम 1 वोल्ट अप्लाई करा, 1 करंट पास करा, देन वी विल कॉल इट इज 1 ओम. ओके, सो 1 ओम इज 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर. 1 ampere. और एक्चुअली भी इस पे डिपेंड नहीं करता, ये तो 1 ओम तो फिक्स रहेगा ही रहेगा, लेकिन हम जब डिफाइन कर रहे हैं तो हम इस तरीके से कर रहे हैं कि उतने तक को 1 ओम ले रहे हैं. अगर किसी लेट्स से किसी कंडक्टर में 1 वोल्ट अप्लाई करा और वो 1 एम्पियर ही करंट दे रहा है, तो हम कहेंगे वो कंडक्टर की जो रेजिस्टेंस है वो 1 ओम. ओके, Yeah. इसका मतलब ये नहीं है कि आप कंडक्टर में डिफरेंट वोल्ट लगाओगे तो डिफरेंट रेजिस्टेंस आएगा. नहीं, वहाँ पे तो करंट चेंज होगा क्योंकि ये रेजिस्टेंस तो फिक्स रहेगी, है ना? ये बात क्लियर होनी चाहिए क्योंकि मोस्टली लोग यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं कि रेजिस्टर इन पे डिपेंड कर रही है, रेजिस्टेंस इन पे डिपेंड कर ही नहीं रही. ये वैल्यूज इन पे डिपेंड कर रही है बेसिकली. ओम्स लॉ यही तो कहते हैं. ये थोड़ा सा मैं दोबारा बोल देता हूँ कि ओम्स लॉ क्या कहते हैं? V is directly proportional to I. It's just a constant. Okay, it is not just R is dependent upon V or something. It is not like that. This is dependent on each other and it is just happen to a constant.
Constant. ओके, तो एक तो न्यूमेरिकल कर लेते हैं एंड देन वी विल हैव अ टेस्ट. तो आप एक करके दिखा दो मेरे को एक बार. So let's say we have electric circuit. We have electric circuit with 24-volt battery. Okay. So default 24-volt battery, and we have a resistor of 6 ohm. So resistor. So question is, okay, this is simple. What is the question? What is your current? बिना पेन उठाए कर सकते हो ये? The screen is freezing. It's not showing after the. If you have written anything, it's not shown after the battery portion. Oh, okay. We should wait for some seconds. Let me know if you got I equals to question mark on the screen. Still not visible? It's Ananya, still not visible? yeah, it's still not visible. Still the same. Maybe the connectivity issue is there. Can you see now? Now it's visible. Can you see now? Yeah. Because I think it's battery is low. That's why. So we have a Yeah. 24-volt battery and 6 ohm resistor. So can you tell me what is the current without picking up your pen? 4 ampere. 4 ampere. Okay, Yeah. yeah, 4 ampere. Sorry, I thought it's 60. Yeah. So it's easy, right? I equals to V upon R. 24 divided by 6. So I equals to V upon R. And remember, what is your answer if I write 6 kilo ohm without picking up your pen? 0.4 ampere. 0.4. It's kilo. What is the value of kilo? Wait. You remember this, right? Kilo, mega, micro, milli. Kilo is 1000 times, right? Yeah. And it's I not am kilo. It is sorry. the It's multiplier. just my calculation error. Right? So these are the multipliers. This you know, right? If you have forgotten, Yeah. just have a revision. 80.004 ohm. Right, right. I mean ampere. Right. So mega is 10 to the power 6, milli is 10 to the power minus 3, and micro is 10 to the power minus 6, and so on. Okay. So keep this in mind. These are some very common mistakes, even this one line question. But just okay. Okay, this is an interesting question, and this is a little challenging. Could be little. So I'm writing a full statement. Okay, you can use a pen paper. An electric. So an electric iron draws. Now when I put my charger, it is not and is not working very efficiently. So an electric iron draws a current of 3.4 ampere
from 220 volt, to be very slow to write, I guess. 220 volt power supply or supply line. Now question is, what current will this electric iron draw when connected to 110 volt power supply. Yeah, supply line. You got the question? Yeah. Take a minute or two and let Yeah, me know. just give me a minute. I'll calculate and just tell you the answer. It'll be 64.7 ohms, and if I convert it, then it'll be 1.7 ampere. 1.7 ampere. Yeah, that's correct. So you got the question, right? Yeah. So let me just explain here. You missed anything? I don't think you have missed anything, but still. So we have a 220 volt power supply, right? And your iron, that is your electric iron, it is 3. What is happening? So it can draw 3.4 ampere current, right? So my question is, Yes. what if your power supply has been reduced? So what will be the current now? Okay. So for this, from here, you have to first calculate your resistance of iron, right? Which will be, so you will apply V equals to I by R, I into R, which will give you resistance of how much you have calculated? 64.7. 64.7 ohms. 7 ohm. Okay, so now this is fixed because this is we are using the same iron here also. Okay, we have the same iron. Now this resistance is fixed, that is 64.7. Now when I connect this with a 110 volt power supply, then how much current will it draw? Simply it's V by R, which will give you 1.7 ampere. 1.7 ampere. Nice. So you got the concept right, everything. And Yes.